Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley, Spirituality and Healing Meet and Wednesday session. And we are here for the Ashtanga Yog program that we are into. And this is the third week. So we are going to do the third limb of Ashtanga Yog, and that is ASANA. Yes. So before we move on with the agenda for today, we will have a quick recap of what we have done so far in this journey of Ashtanga Yoga. So we have covered the 5 steps of Yam and we have covered the 5 steps of Niyam. Yes. So of course we will do a quick recap, but before that, anybody has any kind of questions that you want to know or if you want to share, because we discussed some very good, we had some good discussions on the topics of 5 steps of Yam and 5 steps of Niyam. So it's basically how you interact with the outside world. There are some rules for that. We saw that in the Yam, and there are some basic rules for self-discipline, which is for your own spiritual growth. So we saw that in Niyam. So 5 steps. So there are actually 10, you can say 10 commandments. You can say that. Yes, but these are the 10 rules of Yam and Niyam, which are very, very essential for a spiritual seeker to move on in the spiritual journey. Okay. So though it looks like theory, but it is fundamental. It is very fundamental, and it is very, very important that you follow, understand, and start applying these in your life. So, anybody who wants to share, life में apply किया और क्या असर आया? इन 10 में से कोई भी एक point ऐसा जिसने कुछ impact लाए आपकी life में, so you can share that. Which one was missing, or which one you try to practice in life in the last 2 weeks? And you got some results which was different from the normal result, and so you are happy about it and you want to share. So please go ahead. It will make it more real for everybody. आपके लिए भी real होगा, औरों के लिए भी real होगा. So anybody who wants to share that? Last week we had a good discussion on the level of contentment. Yeah, that was a good discussion. It went on for quite some time. So I think that was important. So anybody who wants to share from there? And meanwhile, let me welcome just Amit ji, एक बार welcome कर लूँ मैं जो अभी आए हैं late. So Pushpa ji namaskar, Soumya ji welcome, C Mani ji welcome, Sylvia Paul ji welcome, Alok Gupta ji welcome. Yes. Over to Amit ji. Yes, Amit ji, you want to share something? Yeah, in fact, I'm looking at the picture flyer that you have posted today, which has been getting posted every week also. So Yam and Niyam that we've covered, and I am doing this with you for the second time. I think we did this similar activity for about 8 to 10 weeks, I think last year. So I can relate to it now, and now I'm repeating it, and I can really relate that how the difference has come by. So the 5 elements of Yama and 5 elements of Niyama, which is Yam and Niyam. So it's actually, theoretically, I want to just utter those things, like Yam includes Ahimsa, Satya, Brahmacharya, Asteya, and Aparigraha. And though I heard in this discussion last year, but then this year, once again in the last 2-3 weeks, it is giving another quote and layering, and also making me feel that, yes, I think I achieved to some extent now. And also in Niyam, there are 5 elements, which is Shauch, Santosh, Tapas, Swadhyaya, and Ishvara Puranidhana. So which in the same order means cleanliness, contentment, zeal for life, self-study, and surrender. Wonderful. So I think very good. So I'm just reading out. That's fine, but you have done a quick recap. So that is what I was supposed to do. So you have covered that in 1 minute. So absolutely great. Now, anybody who has any questions on that, or anybody who wants to share anything on this, please go ahead. If you want to share, go ahead, Amit ji. No, I think it's just, it will be too much to explain, but I think in just 20 seconds, if I say that amazing journey, and looking at the past, I can see the future happening in the same direction, and enjoying every moment. Absolutely great. Absolutely great. Yeah. So let me tell you, I won't say mastery, but your progress in these 10 points will actually be contributing to your journey further up in these 8 steps. That's what I said. Absolutely. जब तक यहाँ पे आप एकदम strong नहीं हो जाते हो, like you should be very clear on the point of ahimsa, satya, and dharma. Then only you will move forward towards dharana, dhyana, and samadhi. If you don't have this clarity, sorry, you have to do all over again. It's like if the nursery is not done, you can't go to the 12th and graduation and PhD. Yeah. So these are the basic steps
जैसे मैं पहले बोलता था ना, ये सब तो मॉरल साइंस में सीखा हुआ है. So this is actually, you have to apply that. Moral science is all theory. You have to apply that in your life, right? And when we talk of brahmacharya, we are talking of moderation. So depending on what stage of life you are, if you can get moderation into your life, you will go very high in your spiritual journey. Moderation ही नहीं है, promiscuity है, sexual misdemeanors are happening in your life. Forget the journey. Forget the journey. Yeah, I'm making some bold statements, but try to understand the impact of these. So पहले 3 steps हैं ये, but बहुत important है. Then non-stealing, non-accumulation, personal cleanliness, शरीर का cleanliness, mind का cleanliness. Mind clean नहीं होगा, how can you go and meditate? Like my Guruji used to say, you cannot have an asana of bundles of rupees notes and then sit in meditation. You need a proper asana. योगा मैट का आसन चाहिए, नोटों की गड्डी पे बैठ के मेडिटेशन नहीं होगा. He would say that. तो कहते घास पे बैठो, तो घास पे बिठाते थे वो, and then he would घास, obviously जैसे आजकल रेनी सीजन है, तो we used to go during that season also, so it would be all wet. So people would be very scared, कपड़े गीले हो जाएंगे या ये हो जाएगा. कहते कपड़े गीले हो रहे होने दो, बैठो जमीन. And then he would make us sit there and do meditation for 15-20 minutes, and by the time we get up, we were all all kind of landscapes on our clothes. So anyway, just a lighter vein. But yes, you need to be very, very clear. These fundamentals are very, very important. And meanwhile, yes, Priya ji, I got your message. So VO 1907 is Priya ma'am. So welcome. She's a new student who has joined in DHV. So she's here. Very good. Welcome. So you feel free to ask question and feel free to share whenever you are okay. And meanwhile, you can go on mute. If there is any kind of disturbance, everybody should go on mute. Yeah. Okay, good. So good, Amit ji ने recap करा दिया जल्दी से. And we are talking of self rules, self discipline. So we talked of we talked of Shauch, we talked of Santosh, and Santosh we had a big discussion. Yes, level of contentment. So who wants to tell me the definition of contentment का level जो हमने discuss किया था? Anybody who remembers? It is a balance between dash and dash. कौन बोलेंगे? Contentment is a level, is a balance between दो तराजू हैं, एक तराजू में क्या है, दूसरे में क्या है. अगर ये बता दोगे तो आपको याद रह जाएगा. Expectations and acceptance. Very good, wonderful, Priya ji. Good recap. So balance of expectation and acceptance, that is the level of contentment. Yeah, and whenever your expectation is high, what will happen? Contentment will be less, and expectation will always result in killing of the joy. You cannot have joy if you have expectation. Yes, how many of you are clear on this? If you are, we always have expectation, then we think, why can't we be happy, right? Expectations will kill joy. This is a universal rule. How many of you can understand? How many of you have experienced this? Anybody who has any doubts, then I can give an example. या कोई और example दीजिए. How does your expectation kill the joy of living the life? Because expectation will happen towards the end of certain process, which is, let's say, destination of a journey. So it kills the very fun and the joy which the journey can provide every moment. This could be okay. I understood you perfectly fine, Amit ji. So absolutely bang on. This could be. कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया अमित जी ने क्या कहा? You cannot enjoy the journey if you keep thinking of the destination. That's what he is trying to say. Because expectation is of the outcome, that this is what we expect out of. The name itself suggests. So where is the journey? So I think being in the moment, enjoying every moment, carpe diem, capture the day, brings the joy. मंजिल से खूबसूरत लगे हैं रास्ते. So destination is destination, but the journey is always the best part of the destination. Suppose we are going from here to मसूरी. मसूरी में पहुंच के तो रूम के अंदर बैठ के आपको पेड़ ही दिखेगा बाहर. The journey from here to Mussoorie is what is really entertaining. Friends के साथ जा रहे हैं या family के साथ जा रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं, enjoy करते हुए जा रहे हैं. But फिर से मेरे को 5 बजे तक मसूरी पहुंचना ही है. Now you are gone. Now you are looking at the watch. You are looking at getting stressed out. Where is the joy?
there is no joy. Yeah, how many of you can connect with this? Expectations will always kill the joy in life. You will never live the life with joy because you're too much bothered and worried about the result. Yes? Okay. If everybody has understood, very good. We'll move on. Okay. सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, बोलिए. अगर जैसे हम कुछ भी करते हैं किसी के लिए तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो करते ही हैं कि वो रिस्पेक्ट दे या उसको अप्रिसिएशन ही, मतलब थोड़ा सा हम चाहते हैं। अगर कुछ भी ना मिले और वो उसको कोई वैल्यू नहीं दे, चाहे बच्चे हो चाहे पार्टनर हो या जो भी हो, तो उसको मतलब जो भी हमें फील होता है, जो दुख होता है, उस चीज को फिर हम कैसे बियर करें, मतलब उसको भुलाना कैसे होता है, उसको कैसे इग्नोर किया जाता है कि चलो इग्नोर ठीक है नहीं नहीं करना, मिला तो ठीक है। कम्युनिकेशन करनी है. इग्नोर क्यों करना है? एक एक्सपीरियंस हो गया, यू वांटेड अप्रिसिएशन, यू डिडंट गेट इट, कम्युनिकेट इट. हाँ, वाइफ्स नॉर्मली डू दैट वेरी क्लियरली. खाना बनाया, बोलो अच्छा है. लेकिन जैसे आपने बोला और फिर भी वो दोबारा से वही रिपीट हो रहा है, फिर आपको नहीं हो, तो हर बार आप कम्युनिकेट करोगे तो इरिटेशन होती है फिर। So you have to accept that. Some people express like that only, unsaid. अच्छा, तब Some एक्सेप्टेंस husbands आता है। are, some, हाँ, accept करो ना, वो ऐसा ही है. See, acceptance is for the other person. Like I said, accept आप दूसरों को करोगे. हम उल्टा करते हैं. हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं और अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो चीखूंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं तो मारूंगा, है ना. अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं. तुम मुझसे तमीज से बात करो. होना क्या चाहिए? या You have to accept the other person the way he is and the way he is not, or she is or she is not. And you have to keep improving your inside world. To have expectations from yourself, improve yourself. Accept the other person the way he is. वो अपने संस्कारों से, अपने संस्कारों के बल पे वो अपना बिहेवियर कर रहे हैं. अच्छा सर, जो हमने ये 5 व्रत, मतलब जो भी ये यम जैन धर्म में व्रत ही हैं, तो इनको जो हमने पढ़ा था, तो अहिंसा सत्य ये सब कुछ लिखा है, लेकिन सत्य मतलब हम हमेशा सत्य नहीं बोल सकते, कभी कभी आपने शायद डुबो भी देता है। पहला देखा नहीं है. जो यम हमने डिस्कस किया था उसमें बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया था सत्य के बोलने के कुछ रूल्स हैं. जी, डिपेंड्स ऑन द टाइम, प्लेस एंड द सिचुएशन. ओके, समय, स्थिति, समय, स्थान, वर्ड कैसे भूल गया, उसका सीक्वेंस भूल गया हूँ. बट इट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यू विल स्पीक द ट्रूथ. You will not speak all the truth to all the people at all the time. यस, And you cannot see that in isolation. You have to see satya along with the dharma. अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना है तो झूठ बोलिए. उस समय जान बचाना आपका धर्म है. यस, और उसके लिए अगर किसी पे हिंसा करनी हो तो करिए. धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना जरूरी है, धर्म युद्ध है वो. सो दीज 3 थिंग्स गो टुगेदर. सत्य, धर्म और अहिंसा अलग अलग नहीं देख सकते, ये एक साथ देखोगे. राइट? ओके, Yeah. यस That सर, is what we had थैंक यू। discussed. So go through that recording again. It will be more clear to you. That is why I said this ओके सर, understanding has to be clear. Otherwise, you will never move on the path of dharma. तुम यस, मान लोगे कि मेरे को तो सच बोलना ही है, वो मरता है तो मरे, मैं तो सच बोलूंगा. Then you are in big trouble. Then you are not following the path of dharma. Right? यस सर, So you have to see समय, काल और परिस्थिति. हाँ, ये है word. समय, काल और परिस्थिति. Right? Okay, good. Let's acknowledge Priya ji. She has come here for the first time and she is asking some good questions. All right. Yes, Gunjan ji, you have raised your hand. You want to share something? मेरा फोन। Hello, please go on mute if there is a disturbance. यस सर। Yeah. नहीं सर, बस वो एक यही बात करनी थी। प्रिया जी शायद पूछ रहे थे कि हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एवरी टाइम, लाइक हाउ कैन नॉट वी एक्सपेक्ट फॉर एनी टाइम एवरी टाइम। तो मैं कहने लगी थी कि वो हम बस इतना सोच लेते हैं कि सामने वाले का डिजाइन ही ऐसा हुआ है, क्या करें अब बेचारा। उसके डिजाइन की और बात नहीं है. डिजाइन ही है। बेचारा नहीं, सोल है, ऑन ए जर्नी है, अपने संस्कार के मुताबिक वो कर्म कर रहा है. एंड हु आर यू टू जज हिम? वो 100 जन्मों के बाद इस लेवल पे आया है. आप 100 जन्मों के बाद इस लेवल पे आए हैं. यू कैन नॉट जज एनी सोल. You have to accept that soul. Yeah. And then by demonstrating through your sanskars, you have to inspire that soul to improve on their sanskars. You cannot tell them, तुम झूठ मत बोलो, तुम आलसी हो, तुम ये करो. No, you can't do that. By your actions, you can demonstrate how you can
live a powerful life, and how you can inspire others to change their sanskars. That is what is motivation. उसके हैबिट पैटर्न्स को तोड़ना है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपके तरीके से वो आपके लाइफस्टाइल से वो मोटिवेट हो. यू शुड लीड देम विद एग्जांपल, डोंट प्रीच, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. राइट? प्रीच करना तो बड़ा आसान, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. बच्चों को सुनाओ, करते हैं कुछ नहीं. बच्चों को बोलने से कुछ नहीं होता, आप Yes, करने sir. लग जाओ, बच्चे फॉलो करेंगे. इट्स एग्जैक्टली द सेम विद एवरीबॉडी. यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. यू कांट प्रीच, यू कांट टेल देम तुम सच बोलो, मैं तो झूठ बोलूंगा, मैं तो ऐसे ही हूँ. यू विल नेवर सक्सीड. यस, ओके गुंजन जी, गुड. Okay, thank Let's you. acknowledge Gunjan ji and Priya ji. Yes. Anybody else who has any question? Otherwise, move on with the topic. Asana. Yes, Vijay ji, go ahead. एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ शशिधर जी. हाँ जी, बिल्कुल. It has been playing on my mind हम्म. about moderation, ब्रह्मचर्य. अभी एक बात ये भी, हालांकि बैलेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग, Yeah. लेकिन जब तक आप इम्बैलेंस नहीं होंगे तब तक कुछ स्पेशल अचीव भी नहीं कर पाएंगे ना. Come again. Explain. Like for instance, a sports person. Hmm. If a sports person doesn't practice every day and puts hours of practice and invests in his body and just does everything right to get there, he will not reach there. हाँ, तो वो तो साधना है ना उसके लिए. साधना हाँ, तो करनी है. लेकिन उसमें वो इम्बैलेंस करना पड़ता है उसको. मैं जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई 4 घंटे 5 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बना रहा है, दैट्स एन इम्बैलेंस इफ यू आस्क मी पर्सनली. Depends what is his field and how much his body can take and how much he has practiced. पहले ही दिन कोई जाके 5 घंटे कर लेगा, वो अगले दिन उठेगा नहीं. But if somebody like Virat Kohli or John Abraham does that for 5 hours, it is less for them. They will do more than that. Yeah. So it depends how much you have trained your body. इसीलिए बोलते हैं ना, बॉडी को ट्रेन करना है, बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना. नो ओवरडूइंग. रिमेंबर द रूल, नो ओवरडूइंग. ये अष्टांग योग का एक बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है which we are going to follow. So no overdoing. That is important. So moderation will come. Moderation, when we are talking of brahmacharya, I thought you were talking of something else, but that was different. Okay. When you talk of this is a practice. Practice is depending on the how much you have done. कोई योगा करेगा आधे घंटे में थक जाएगा, वो और नहीं कर सकता. और कोई है जो 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से योगा कर सकता है पार्क में जाकर. Correct. So it depends on what you have practiced so far. I think if I can just add one line, I think any activity which is towards expanding your own possibilities which is not hurting anybody or anyone. Expanding our own possibility, for example, this exercise example that we're taking, I think if it is happening which is not hurting anybody, provided it is expanding our own possibilities. Because as we go forward in this journey in the Ashtanga Yog, धीरे धीरे समाधि तक लेके जाते हैं, तो मॉडरेशन तो कभी ना कभी स्टार्ट करना पड़ेगा. मे बी द फर्स्ट स्टेप है वो फ्लेवर. मॉडरेशन नहीं बोलूंगा, उसमें बैलेंस है. You have to have balance in life and you will have to balance everything in life. Right? आप moderation जो बोल रहे हैं, when it is in terms of brahmacharya, it has a different connotation. You have to understand that. When you're doing an asana, you cannot say moderation. Then you will talk of balance. Okay? When we talk of brahmacharya, we are talking of moderation in the sense that there should not be any sexual misdemeanors or misbehavior or promiscuity, like we say, you know. तो वो सब नहीं होना चाहिए, because then you are up मार्ग से भटक रहे. ये है इसका मतलब. Okay, so if you are married, you can have a good family life with your wife or your partner. That is okay. To put that in bluntly, if you have multiple partners, that is not advisable in the Ashtanga Yoga. That is what I meant. Okay. Yeah, that is moderation in a family life. And if you have brahmacharya में तो ये the actual brahmacharya stage, your first stage है आपका, first 20 years, there it is advised that you should not involve into the family life, because that is not the stage for that. The first 20 or 25 years is brahmacharya, where you are completely abstaining. 25 to 50 you indulge in the family life and with moderation. That is what I explained just now. After 50 it is vanaprastha. Yeah. So you know, you are already withdrawing from the worldly matters, so you will withdraw from whatever you have to. Whatever you have to.
is not that it will be forced on you. It is your decision. And then finally, when you are going to sannyas and moksha, that is 75 to 100. That's a different story, right? Where the target is only moksha. So that is where you were talking of brahmacharya or moderation. When you're talking of sadhana, it is all balance and practice, nothing else. Like a person like Arjun or a person like Sachin Tendulkar will bat for 20 hours possibly. So होते वक्त भी वो batting कर रहा होगा. Right? So you cannot say what is good for him. He will decide what is good for him. His practice will decide that. Somebody जो रियाज करते हैं, somebody like Lata Mangeshkar and all, जो classical singers हैं, they have to practice. They will practice more than 10 hours a day. उनका काम है वो. उनका passion है, उनकी life है वो. It is like breathing for them. Okay. So I hope the point is clear. Yes. Yes. All right. Very good. Very good, Vijay ji. Pechida, tricky question tha, but yes, answered. Yes, Krishna, you want to ask something? No. Okay, good. Yes, Gunjan ji, आपने फिर हाथ raise किया हुआ, hand raise. You want to share something? Gunjan ji, you want to share something? Okay, so I will take that sharing later. I will take that sharing later. First, now we will move on with the agenda for today. If there are no more further clarifications required, and meanwhile, let me welcome जो उसके बाद आए हैं. So Mandeep Sharanpun, okay. Hey, Mandeep, thanks for joining. I know him. Yeah, thank you. Yeah. So Gyanchand Mishra ji, Coach Pankaj Kothari ji, Alok Gupta ji, welcome. Yeah. Okay, so now we move on to the third limb of Ashtanga Yoga, which is ASANA. Now, ASANA, in one word, is posture. So, right now, when we hear posture, you should have a correct posture. You look बैठे हुए हैं, कमर सीधी. So, keep your back straight. This is the second important principle of Ashtanga Yoga, which we discussed, right? So, one was no overdoing, which I said before. Second is keep your back straight as much as possible, as long as possible. So, if you're sitting here, you should have your back straight. Yes. Posture. Asana का मतलब यही है posture. So the way you are holding your body, that is what is posture. And to have a perfect posture, there are many asana vyayam that we practice. Okay, so there are many categories of asanas that they are prescribed here. They are taught here. So a sadhak will go through the different asanas so that his body is fit, flexible, healthy, and he can maintain a good posture for his body for a considerable long period of time. That is the whole purpose of asana. Clear है ये? तो आसन means एक perfect posture में आप अपनी body को रोक सकते हैं काफी देर तक. And to specify it, why? Because we are going to the higher limbs of yoga, so you need to sit in a Padmasana for meditation. So Padmasana or Ardha Padmasana is the posture which is suggested or recommended for meditation and dharana, dhyan, samadhi. So sitting in that posture for maybe 1 hour, that is the whole purpose of posture, right? But to maintain that, अक्सर क्या होता है जब हम meditation में बैठते हैं तो क्या होता है? After 5 minutes, you have to move your leg. Then there is an itching here. Then you have to move your hands. Then there is something going on your face. Then गले में खुजली. तो ये सब अगर होने लग जाएगा, then you are not comfortable at all. So आपका posture अभी ठीक नहीं है. That is why posture is so very important. So after the yam and niyam, the third leg of Ashtanga Yoga is called the posture. Yes. So let me ask you a very general question first, and then we will move on the importance of these posture. Why should we have the back straight? Pehla question. I said rule है, basic fundamental rule है. First rule is no overdoing. Second rule is keep your back as straight as possible. And third is keep smiling. Yes. If you don't have a reason to cry, you have to smile. So that is the third important step, fundamental of the Ashtanga, all the steps. So we will focus on the second step now. Keep your back straight as much as possible, as long as possible. क्यों? क्या जरूरी है? Anybody who can tell me the scientific reason behind it? Back straight से क्या होता है? Yes, Vijay ji. मेरा ख्याल it's the best for energy flow, Shashi Dhar ji. Very good, perfect. When your back is straight, all the 7 major chakras are aligned in a straight line. So when you breathe, all the pranic energy flows through the chakras very easily. So you are fully charged.
Your body and mind can be fully charged with the pranic energy with your breath. That is very important, that posture has to be straight, back has to be straight. So you can access the maximum energy during breathing. That is why it is important, right? Okay, very good. Anybody else who has any different view? Why should we keep the back straight? In general, चलो एनर्जी लेवल पे छोड़ देते हैं. In general, कोई कमर कस के बोलते हैं ना, कमर कस के तैयार हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको? बैक स्ट्रेट, एकदम से टेंशन में खड़े होते तो क्या होता है? शोल्डर्स बैक, बैक स्ट्रेट. व्हाट डज दैट पोस्चर शो? किसी की कमर झुकी हुई हो, alertness, very good, and you're aware of whatever is happening around you. very good. और बैक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. very good, we come to that. Okay, but right now I am saying very good, बहुत बढ़िया लोग जी. So I was coming to that. अगर पोस्चर सही नहीं होगा तो क्या क्या होगा, उसका जवाब उन्होंने पहले ही दे दिया. But when the back is straight, just see a person back drooping, सर झुका हुआ, क्या एनर्जी, क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो? मतलब व्हाट विल यू मेक ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग लाइक दैट? आपके सामने दो लोग खड़े हैं, एक एकदम सीना तान के, कमर सीधी है उसकी, सर उठा के, शोल्डर्स, यू नो, यू कैन से स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, और वो बैक स्ट्रेट करके आपसे बात कर रहा है सर उठा के, और दूसरा सर झुका के, कमर झुका के बात कर रहा है. व्हाट इज द एनर्जी लेवल फॉर बोथ ऑफ द पर्सन? नॉट इंटरेस्टेड और नॉट अटेंटिव. Not interested, weak, energy low, है ना, kind of a thing. Maybe he's sick, maybe he's in the wrong place, he doesn't want to be there, right? तो ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि टोटली नेगेटिव प्रोफाइल बन जाता है उस बंदे का, जो कमर झुकी हुई हो और या तो बीमार है या नॉट इंटरेस्टेड है या एनर्जी लो है. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग. बट इज बैक इज स्ट्रेट, स्माइलिंग फेस एंड लुकिंग स्ट्रेट इनटू योर आईज एंड टॉकिंग gives a very confident look. So even in otherwise, चाहे एनर्जी लेवल पे छोड़ दो आप, कमर सीधी हो और सर उठा के कोई बात कर रहा है, द एनर्जी लेवल इज वेरी वेरी पॉजिटिव, या वेरी हाई, वेरी पॉजिटिव. या जरूर है ना. हाउ इज द जोश? तो हाई सर आ जाएगा जवाब, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट वी वांट व्हेन यू वांट टू लिव योर लाइफ. दैट इज व्हेन you will experience joy and peace in your life, correct? तो बैक स्ट्रेट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, राइट? Now, when we talk of back straight, if you are not keeping a back straight, if you don't have a posture, nowadays there is a sedentary lifestyle problems. बहुत सारी problems है sedentary lifestyle से आती हैं. क्या क्या आती हैं? Diabetes is considered to be a sedentary lifestyle disease. और बहुत सारी lifestyle diseases हैं. Back pain, spondylitis. Spondylitis आजकल क्यों हो रहा है लोगों को? पीछे गर्दन में क्यों दर्द हो रहा है? ये पोज है, मोबाइल हाथ में, ये पोज है. चलते भी ऐसे हैं, खाते भी ऐसे हैं, हंसते भी ऐसे हैं, रोते भी ऐसे ही हैं. तो क्या होगा? गर्दन, आपका सिर और कमर के बीच में जो गर्दन जो है, गर्दन की जो प्रॉब्लम्स हैं सारी वहां पे आ जाएंगी. तो सर्वाइकल वहां से आता है, स्पॉन्डिलाइटिस वहां से आता है, बैक पेन, सही पोस्चर नहीं होगा तो आता है. बैठने का पोस्चर गलत है, यू आर इन बिग ट्रबल. अभी पीछे में एक वीडियो देख रहा था. मैक्सिमम प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम जंक फूड, इज नॉट फ्रॉम अल्कोहल, इज नॉट फ्रॉम सिगरेट्स, इट इज फ्रॉम बैड पोस्चर, बैठने का. और दिन में हम खड़े कम होते हैं, हम बैठते ज़्यादा हैं और सोते ज़्यादा हैं, और वो पोस्चर अगर ठीक नहीं है, यू आर इन बिग ट्रबल. तो स्पाइन की जितनी भी प्रॉब्लम है, द रूट कॉज इज व्हाट? बैड पोस्चर. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू लेकिन दैट? सर एक क्वेश्चन, अगर पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आप कैसे अपना पोस्चर ठीक कर सकते हो? फिर तो Periodically, आपको you can गर्दन take the झुकानी ही book. पड़ेगी. Periodically you can take the book and walk. करते हो कि नहीं? वो तो मतलब जैसे कभी आप कुछ लर्न कर रहे हो तब है, लेकिन जैसे आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको हमने ये थोड़ी, घंटों ऐसे ही बैठना होता है. you don't have to, after every 1 hour take a break for 5 minutes, walk. ओके. After every 5 minutes go to the, take a, पानी पीने के लिए उठ जाओ, कुछ और करने, किताब लेके थोड़ा सैर कर लो. हाँ, you should walk. Walking is the best thing. Walking में आपका बैक अगर सही रख के आप वॉक कर रहे हो, that will take care of many wrong postures. Don't keep sitting for 6 hours with the head down and your energy will go down. It has to go down. Keep charging yourself. मोबाइल बैटरी 0 होने से पहले चार्ज करते हो ना? जी. Exactly the same with the body. बॉडी की एनर्जी लेवल 0 होने से पहले चार्ज करते रहो उसे. हर 5 मिनट में चार्ज कर लो.
हर एक वो घंटे चार्ज में करने का वो एक तरीका तरीके होता हैं। है कि पानी की बोतल और बगल में नो कुछ खाने के लिए रखो। नो, that won't work. Breathing is the way how you can charge yourself. Posture, keeping the right posture is what is going to charge yourself. Watching, being in the sunlight is going to charge you. Artificial light में छोड़ो, थोड़ा sunlight में जाओ। हाँ, तो जो 24 घंटे भी अगर पढ़ते रहते हैं, किताबी कीड़े भी हैं, I will say suggest go to the balcony with the book, read one paragraph, say that in your mind and look here and there. आसमान देखो, कमर थोड़ी सीधी हो जाएगी, सर थोड़ा ऊपर हो जाएगा. There are many ways how you can to do it, but keep the basic idea very clear. Posture has to be absolutely perfect. And let us hear from more people. Amiji, yes, you raise your hand. Go ahead. Yeah, it is not for me, but luckily we have an expert in this group right now. Yeah, And he's known for the work on the postures. And I want absolutely. Mr. Singh also. He raised the hand. उससे पहले मैं उनको invite करना चाहता कि 2 मिनट बताइए. नहीं, उनके पास तो मैं आ ही रहा था, मुझे मालूम है वो he is an expert in that area, and I will definitely come to him. But yes, okay. So over to VP Singh ji. Sir, crisp, short and crisp. हाँ. मैं expert नहीं हूँ. I am a student of life, and whatever you are saying, all people are coming because of not following what you are saying. Maximum cases are only lifestyle disorder. Food disorder कम है, lifestyle disorder ज्यादा है. ज्यादातर लोगों की नेक में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे बैठ रहे हैं जो शशि जी ने बताया. दूसरा, नीचे का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर बाहर निकाल के बैठते हैं, जबकि नेचुरल कर्वेचर अंदर की तरफ है. तो ये चीजें सारी रेलिवेंट है, और जो पेशेंट आ रहे हैं वो इसको ना करने वाले हैं मेरे पास. और मैं सबको समाधान यही बताता हूँ जो इन्होंने फ्री में बताया आप लोगों को. इसलिए समझ जाओ, फ्री वाली चीज को मान लो, नहीं तो 20,000 लेके इलाज कराओगे बाद में सब लोग. ओवर टू शशि जी. थैंक यू सो मच. क्या बात है. थैंक यू. वेरी गुड VP सिंह जी, ये अच्छा बताया. फ्री में सीख लो, वरना उनके पास फीस देके जाना पड़ेगा आपको. वेरी गुड. ओके VP सिंह जी, थैंक यू सो मच. मैं एक बोलना चाहूंगा सभी लोगों को. Yes. VP सिंह जी बहुत ही अच्छे पहुंचे हुए प्रैक्टिशनर हैं. टांडन थेरेपी और बोन अलाइनमेंट थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. And yeah, किसी को परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिएगा. I'll connect you with him. He is in the group. They can talk to him directly. जो DHV में ग्रुप में हैं, they can talk to him directly. Yes. Okay. So very good. Let's acknowledge VP Singh ji and Priya ji for that question, and I hope the message is clear. So posture is fundamental for you, whatever you do, and try to maintain that posture of back straight. The best way to do that is have a routine of walking. If not brisk walking, normal walking, keeping your back straight. हाथ को घुमा के जैसे मार्च पास कर रहे हैं वैसे चलना शुरू करिए सुबह सुबह उठ के. डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल आर सीइंग और नॉट. कमर सीधी करके सर थोड़ा उठा के सूरज की तरफ देखते हुए जाइए और वॉक करिए और लंबी सांस लीजिए. एंड यू सी द मैजिक. all the problems of postures will vanish. Back pain will go, knee problem will go, most of the pains in the body will go. जो skeletal problem से है, यानी कि आपके spine से related है या joint से related है, all that will go very soon if you follow a strict routine of walking and breathing. Okay. All right. So that is about the posture. Now coming to the main agenda. अभी तक हमारा शुरू नहीं हुआ, and we are already more than half the time. So आसन. Now आसन, when we talk of आसन व्यायाम, तो आसन की तो हमने बात कर ली. तो हमको पद्मासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है बिना हिले डुले, कंफर्टेबल. तो आसन की एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम. What does it mean? स्थिर, stability, sukham, comfortable. So stability and comfort is the definition of an asana. Whether you are standing, whether you are sitting, whether you are lying down in Shavasana or whether you are lying down in Makarasana, you should be stable and you should be comfortable. That is the whole process of an asana. Stability and comfort. Remember these two words. Very important. अब ये अगर करना है तो हमको अपनी बॉडी को अलग अलग आसन व्यायाम के थ्रू एक कंफर्टेबल स्टेट पे लाना है. So there are 4 categories of asanas that we do. We start obviously with the standing ones, which is traditionally what is followed is there are many asanas which we do while standing. After that there is a category of asanas that we do while sitting. Right? तो पहले बैठ खड़े होके हम कर लेते हैं. उसके बाद obviously मैं बाकी चीजें नहीं बोल रहा because you know what I'm trying to say. योगा मैट होगा या तो गार्डन में करेंगे या घर के अंदर करेंगे. आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो बेटर टू डू एट होम. राइट.
तो आपने पहले खड़े होकर आसन कर लिए, उसके बाद आपने बैठ के आसन कर लिया, देन आप शवासन में लेटेंगे, और उसके बाद शवासन का मतलब है आप पीठ के बल लेट रहे हैं, सो विच वी कॉल एज यू कैन से सुपाइन पोजीशन बोलते हैं उसको। एंड पीठ के बल लेटने के बाद जो आसन आप कर रहे हैं वो सब थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो आप पीठ के बल लेट के कर रहे हैं। उसके बाद यू टर्न एंड यू लाई डाउन ऑन योर स्टमक एंड देन यू डू द प्रोन आसन। प्रोन आसन इज जो आप पेट के बल लेट के, स्टमक के बल लेट के करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ आसन बोलते हैं। उसके बाद आप बैठ के गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज, आसन के बाद आता है प्राणायाम, देन यू सिट इन ए पोजिशन एंड देन यू डू प्राणायाम। करेक्ट? नाउ लॉट मेनी टाइम्स पीपल हैव आस्क्ड मी, आसन और व्यायाम, आसन की जगह मैं एरोबिक्स कर लूं या मैं कोई जिम में जाके एक्सरसाइज कर लूं, तो वो ज्यादा आजकल लोगों को सूट करता है। What is the difference between exercise and asana? Anybody? See, I will tell you the reason why you should do asana. So I will tell you the why. Once you know the why, you will find out time how to do it. यहाँ पे आसन नहीं सिखाऊंगा मैं, याद से ज्यादा नाम बता दूंगा। करना कैसे है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, पर क्यों करना है मैं ये बता दूंगा। उसके बाद कैसे करना है, कब करना है, वो टाइम आप निकालोगे। ठीक है? I think ASAN takes care of your from the aspect of Pran Shakti and everything. So ASAN take care of your body from the Vedic aspect also, but gym and all that doesn't cater to that. Why do you go to gym? Okay, anybody who goes to gym, raise your hand. Anybody who goes to gym? Yes, very good. So we have many people here. जिम में जाने के बाद आपको क्या फर्क आता है? और स्फूर्ति आती है शरीर में, एनर्जी आती है। ओके, डन। और मसल्स बनते हैं। मेनली तो जिम में मसल्स बनाने के लिए जाते हैं। दे आर इंस्पायर्ड बाय सलमान खान एंड जॉन अब्राहम, और व्हाटएवर। तो उसके बाद आप वो पिक्चर भी लगा लेते हो सामने, फिर उसके जैसे वेट उठा के थोड़ा सा मसल बिल्डिंग करते हो, राइट? सो बेसिकली ये है कि यू हैव टू लुक फिट, यू हैव टू लुक हेल्दी, एंड यू हैव टू नॉट हेल्दी, यू हैव टू लुक स्ट्रांग। तो मसल्स के लिए है बेसिकली जो आप वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं या जिम में जाते हैं, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मेनली इट इज फिजिकल, आई वुड से। यस और नो? Yoga would be for mind as well as body. आ रहा हूँ, पहले मैं वेट लिफ्टिंग का पूछ रहा हूँ ना, तो अभी जिम और वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। शशिधर जी, I don't think I will agree here with you. माइंड पे भी काम करता है, जिमिंग वर्क्स ऑन माइंड आल्सो। I don't think I'll agree. Tell me how. Tell me how. Because I mean स्ट्रेचिंग भी करते हैं जिम में, स्ट्रेचिंग भी रहती है, Okay. और कुछ मतलब कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, और Okay. एज यू एज आपके मसल वेस्ट होने लग जाते हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर maintenance of the muscles. So I think that is why gym is necessary. So gym is necessary for maintaining of the muscles, yes. For high protein diet, yes. साथ में लेते हैं, प्रोटीन ड्रिंक भी लेके जाते हैं, है ना? Basically physical है ना? Not necessary, but you're right. It is physical, and the idea is that as you're aging, youngsters will go there because they have a role model. There is one major difference. Hold on. I don't want to debate here. I'm just taking the main points, okay? Mainly it is physical. Agreed or not? Yeah. Now, when you do asana, first of all, you have to understand it is accompanied by the slow movement of the body. So there is no muscle building here. It is all about fitness, flexibility, and health, along with the proper breathing. नीचे जा रहे हैं, सांस छोड़ना है, ऊपर आ रहे हैं, सांस लेना है. Combined with the proper breathing techniques when you do, and along with complete mindfulness. Mark the 3 words. Number 1, it is about fitness and flexibility, and of course strength. Yes. Second, it is about the breathing techniques along with it. जब भी आप शरीर को आगे लेके जाएंगे, मुड़ के आगे जाएंगे, तो सांस छोड़ना है. जब भी आप एक्सपैंड करेंगे बॉडी को, पीछे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो इनहेल करना है. Clear? Also, you have to be fully mindful of your breathing and the body that you are stretching, and of course no overdoing. That is the rule. And you are smiling, so there is no stress anywhere. Get the difference? So there is a huge difference between the asana, the yoga asana that we do, and the exercises that we do. I'm not saying which one is good or which one is bad. I'm just saying it is different.
So don't get me wrong. I'm not saying gymming nahi karo. Jao, bilkul jao. A body like John Abraham, you will have to go to gym only. You cannot have that by yoga. But if you want a fit, flexible, healthy body with a sound balance between mind and body, like Rituji just said, it is all about making your mind calm and relaxed. Gym में जाके basically mind will become more restless. उसमें mindfulness नहीं है, उसमें breathing नहीं है. Add these two, gym will also do a great job. So my advice to those who are going to gym is that take care of the breathing and take care of mindfulness and don't overdo. You will get much better results by going to gym. Yeah. So I've got nothing against it. Only thing is I prefer a yoga mat and I go to the park and I can spend there 3 hours, no problems at all. So that is my lifestyle. Not everybody will follow it, but yes, if you want to get the best results of gym, you should follow that. Yeah. Point taken. Before Yes. doing yoga, light exercise will help in Not required. For the yoga. Not required. It will open up the body. It will just create more flexibility. Basically, when you start doing the yoga, the first exercises of standing are to do that only. Okay, so I'll tell you the names, how you're going to do that. So it will be clear. You don't need any exercises. Only thing possibly you can do is to shrug off your laziness and sleep. You can do some walking. एक राउंड वॉक कर लीजिए, बहुत है. वो भी स्लीपर्स उतार के अगर गीली घास पे अगर आप वॉक कर रहे हैं, that is very good. And that is my practice. That is what I do. So take a walk, bare feet on the grass. After that, go to the yoga mat and start doing the exercises. Start by standing. So we'll get on to the asanas now. Okay. Now, anybody who is aware of the asanas, the first asana that we do while standing is Tadasana. Now, don't ask me what is that. You will have to find out. Tadasana is basically stretching. Stretching, when you're standing, you're stretching. So your toes and your arms are going up simultaneously. आसमान की तरफ देखो और आसमान की तरफ extend करो, as if some imaginary hands are stretching you, catching hold of your hand and pulling you up. Okay. How many of you have seen cat? Cat को देखा है, बिल्ली को देखा है? वो सो रही होती है, उसका उठ के क्या करती है? एक लंबा, एक बार आगे को और एक बार पीछे को. That is exactly what the cat does, and then the cat is fit enough for the pigeon kind target, right? So similarly, if you just do the Tadasana, your body is fit enough and fine enough to get into action. Now you can do any asana. Tadasana is very, very important. Do as much as you can. 1 minute, 2 minutes का Tadasana अगर आप कर लोगे, your body is good enough. So of course you start with the prayer and the chanting first, whatever you want to do. Then you do the Tadasana. After the Tadasana, you can do the Surya Namaskar. Now the whole thing is explained. If you can do the Surya Namaskar, absolutely great. Don't bother whether you're technically right or wrong. Start doing it. One day you will become perfect in that. Surya Namaskar is absolutely perfect. You don't need to do anything else after that. Standing में ये दोनों काफी हैं. ताड़ासन करो और सूर्य नमस्कार करो. Clear? एक और आसन कर सकते हो, if time permits and if you have time. Do the Trikonasana. Trikonasana is sidewards bending, which is also very good. क्योंकि सूर्य नमस्कार में हम साइड में बेंडिंग नहीं कर रहे हैं. So Trikonasana you can do along with this before the Surya Namaskar, and then you do the Surya Namaskar. It becomes a perfect standing exercises. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप ये कर लें तो काफी है. Hand rotation, arms rotation, these are warm up. Arms rotation है, knee rotation है, ये सब warm up हैं. But basically आसन सिर्फ 2 ही हैं जो आप ढंग से कर लें, right? उसके बाद अगर आप बैठ के कर सकते हैं, उसके बाद खड़े होने के बाद बैठने का नॉर्मल रूटीन होता है, बट यू कैन ऑल्सो गो टू द शवासन. दैट मीन्स लाइंग ऑन द बैक. क्योंकि सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा सा शवासन लेना कई लोग रेकमेंड करते हैं. सो आफ्टर स्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो डू द lying down, supine position में you can lie down and do the shavasana. Yeah, shavasana, by the way, it looks very simple. It is the toughest. एक बार आप शवासन में लेट जाएं, उसके बाद हिलना नहीं है. And mentally you have to check your body from head to toe and toe to head and release all the tensions in the body. It is a very, very, it is called the awareness pose, and it is a very, very relaxing pose. Yeah, so shavasana is very powerful. लेटने के बाद तो सूर्य नमस्कार के बाद नॉर्मली आई लाई डाउन एंड डू द शवासन. ओके. शवासन में उसके बाद फिर आप एक ताड़ासन लगा सकते हो. लेटे लेटे ताड़ासन मीन्स यू विल स्ट्रेच द लेग
पाम को खींचिए, टोस को खींचिए और हाथ को पीछे खींचिए, सिर के पीछे ले आके. After that, what you do? How many of you know Sarvangasana? Sarvangasana? Yeah, very good. So तो ये जानते हैं. So you lift your legs and first you come to a 90 degrees and then you raise the legs further and then you come to, पहले अर्ध सर्वांग करते हैं, फिर पूर्ण सर्वांग करते हैं. It is a shoulder stand. Yeah, so up from shoulders to the toes will be in one line and your pressure will be on the shoulders, and you, with your arms, with your hands, you will be supporting your hips. So you are basically doing a shoulder stand. That is Sarvangasana. Very powerful. Sarvangasana is followed with the Halasana. It goes back and then the toes go behind the head and it is a plow pose. हल देखा है आपने, तो हल जैसा पोज होता है वो, इसको हलासन बोलते हैं. तो अर्ध सर्वांग, सर्वांगासन और हलासन एक ही स्ट्रेच में करते हैं. उसके बाद यू कम बैक एंड अगेन रिलैक्स. दिस इज वेरी पावरफुल इफ यू कैन डू दिस. ओके, कई लोग उसमें शीर्षासन भी करते हैं, लेकिन आई वोंट रेकमेंड दैट. इफ यू डू सर्वांगासन, दैट इज गुड इनफ. शीर्षासन शुड बी डन when you have done all the others perfectly. Otherwise you can leave the शीर्षासन part. Do सर्वांगासन, that is good enough. क्लियर है ये? तो ये लेटने वाले हो गए आपके, जो बैक पे लेटने हैं. क्लियर? उसके बाद पश्चिमोत्तानासन, सॉरी, पवन मुक्तासन है. यू कैन डू दैट इन केस यू हैव सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. पवन मुक्तासन इज सपोज्ड टू बी वेरी गुड, सो यू कैन डू दैट. पवन मुक्ता, यू विल हैव टू सी द, यू कैन जस्ट नोट डाउन द नेम, बाद में आप उसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी पोजीशन और उसके स्टेप्स मिल जाएंगे. ठीक है, एक बार आपका ये लेटने वाला हो गया, उसके बाद यू स्विच एंड देन यू लाई ऑन योर स्टमक एंड यू गो इनटू मकरासन. या मकरासन में क्या है? अगेन यू विल बी रिलैक्सिंग योर बॉडी एंड मकरासन का पोज है वेयर यू आर ब्रीदिंग स्लोली विद द लाइंग ऑन योर स्टमक. इसी पोज में आप 3 आसन कर सकते हो मकरासन में, विच इज फर्स्ट इज भुजंगासन, विच इज द कोबरा पोज. सेकेंड इज द सलबासन, विच इज द, यू कैन से लकस्ट पोज बोलते हैं इसको, लकस्ट पोज, सलबासन. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है धनुरासन, विच इज द बो जैसा है धनुर. तो धनुर के जैसे आप अपने शरीर को खींचते हैं ऊपर. सो it is a combination of Bhujangasana as well as Salabhasana. So these are the 3 you can do when you are lying on the stomach, Makarasana. After that, there are some variations. People do plank भी कर सकते हैं अगर आपको शौक है उसका. Planking is good. So do 30 seconds or 1 minute of planking, 2 minutes of planking, which is very powerful. You can get very good shoulders there. Yeah. So that is good. उसके बाद आप उठ के बैठेंगे, and when you sit, there are 3 postures that you're going to do when you are sitting, and the most common one which you should do definitely is Vajrasana. Vajrasana is one asana which you can do when you are just had your meals. खाना खाने के बाद एक ही आसन है जो आप कर सकते हैं, बाकी सब खाली पेट करने चाहिए. लेकिन खाना खाने के बाद आप 5-10 मिनट जरूर वज्रासन में बैठिए, and you will find your stomach becoming very strong. In fact, वज्रासन नाम ही आता है कि आप इस आसन में बैठेंगे तो आपकी बॉडी वज्र जैसी स्ट्रांग हो जाएगी. That is how the name comes. So it is like, you will have to see the posture, but then it is very powerful. Your back is straight, very strong, and your hips are, and you're actually sitting between the toes. पांव को मोड़ के आप toes के बीच में आप बैठते हैं. So that is the Vajrasan pose, and it is very powerful. In that posture, you can relax, breathe, and you can also do the neck exercises, neck rotation or the head rotation you can do during Vajrasana. So it becomes very powerful for your spine and your cervical and spondylitis के लिए बहुत अच्छा मानते हैं. सिर को ऊपर नीचे ले आ सकते हैं वज्रासन में when you are sitting. So that is very powerful there. Yeah. So sitting में Vajrasana is one we can do. Then in sitting there are many other postures which you can do, but a couple of which I can recommend is Paschimottanasana is very good. That means you are sitting and then you are bending forward. Both the legs are in front and you are bringing your
forehead and touching the knees, पश्चिमोत्तानासन। अगर एक पाँव को कर रहे हैं तो उसे जानुसिरासन बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट। बट अगर दोनों पाँव से मिला के कर रहे हैं तो उसे पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं, विच इज अगेन वेरी पावरफुल। करेक्ट। So that is one which is good, and after that what is that? Then you can sit in the Padmasan or Ardha Padmasan. So that is the sitting postures. Yes. So it covers all the 4 categories. You should do all the 4 categories. अब टाइम नहीं है तो ये मत करिए कि एक ही कैटेगरी करके चल दिए, नो, चारों करने की कोशिश कीजिए। आसन बेशक 2-2 करिए, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं बताए, 2 या 3 ही बताए हैं हर एक में। So you can cover all these within 45 minutes to 1 hour if you do this slowly with full mindfulness and with the breathing technique. Breathing technique क्या है? बहुत सिंपल है। Don't force the breathing. Breathing will automatically happen. आगे जाओगे तो आपके सांस बाहर निकलना ही है, और अगर हाथ ऊपर लेके जाओगे तो सांस भरना ही है लंग्स में। So just follow the normal breathing. Just become aware of it and make a slightly conscious effort to elongate it. That's all you need to do. Right? So that takes care of all the 4 categories of asana, and then you are sitting in what? Either Vajrasan or Padmasan or Ardha Padmasan or Sukhasan. अगर पद्मासन नहीं लगता है तो अर्धपद्म लगा लो, अर्धपद्म नहीं होता तो आप फिर सुखासन में बैठ जाओ, एंड देन यू डू द प्राणायाम। तो प्राणायाम हम अगली बार डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ पोस्चर। सो यू शुड बी सिटिंग कंफर्टेबली, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट होना चाहिए। 1 घंटे के करीब आप आराम से बैठ पाएं, इसके लिए आप अपनी बॉडी को फिट, फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी बना रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आसन। ओके, यस। इसी में प्राणायाम करेंगे, इसी में आप ध्यान लगाएंगे, और इसी के साथ आप ध्यान करते हुए समाधि स्टेट पे जाएंगे। So that is why this is very very important. आपने पहले हमारे देखे होंगे ऋषि मुनि जो बैठते थे, पद्मासन में बैठते थे, and they would sit there for not hours, not days, but years. हाँ, कहानियों में सुनते हैं आप, कहानियां ही लगती होंगी। 1-1 साल तक बिना हिले डुले अगर बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसको तपस्या बोलते हैं, राइट। तो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, तपस्या। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि पूरे दिन में अगर हम 8 घंटे खड़े होके काम कर रहे हैं तो हमारे टांग दुखे ना, हमारी कमर दुखे ना। तो 8 घंटे अगर खड़े होके, अगर कोई ट्रेनर है ना, लाइक आई यूज्ड टू डू ट्रेनिंग बिफोर, तो 8 घंटे खड़ा होना पड़ता है। ऑफ कोर्स नॉट कंटिन्यूसली, यू विल गेट सम ब्रेक्स, बट इफ द होल डे यू आर स्टैंडिंग, योर बॉडी शुड बी एबल टू टेक दैट। If you are having a sedentary lifestyle of 8 hours sitting, then meanwhile your body should be strong enough to take care of that. तो अगर आपने शुरू में ही, दिन के शुरू में ही 1 घंटा अगर ये से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आएगी, इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours sitting and slouching on the study table, or if you're working in the office and you are sitting on the laptop for 8 hours, you will not have any major problem, provided you have already spent 1 hour to set it right every day. So Priya ji, that answers another question that you had asked. पढ़ते समय पहले से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, right? Okay, so I've spoken a lot and we are just reached the closing time. So any questions, anything that is not clear, anybody who wants to ask any questions, please go ahead. जैसे बताया था आपने कि सुखद होना चाहिए पोस्चर वगैरह, तो स्टार्टिंग में तो एक बार तो पेन होगा ही ना, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस आएगा, फिर जाके वो सुखद मतलब बनेगा ना। हाँ, तो इट इज गुड क्वेश्चन बाय द वे। सो योगा में अक्सर हम बोलते हैं 72 आवर्स यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली इनिशियली। द बॉडी टेक 72 आवर्स टू अकस्टम टू इट। तो आपके जिम में भी होता है ना, एक दिन करके छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी, तो कहते हैं कुछ दिन लगातार आते रहो, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो इनिशियली इफ यू आस्क टू डू समथिंग, वो होगा। पहले दिन आप वॉकिंग के लिए भी जाएंगे या जॉगिंग के लिए भी जाएंगे तो पाँव दर्द करेगा। 3 दिन लगातार जाएंगे तो उसके बाद बॉडी यूज टू हो जाती है। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसीलिए बोलते हैं पहले नो ओवरडूइंग, जितना होता है उतना ही करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन। यस, एनीबडी एल्स? सर ये सूर्य नमस्कार के कितने सेट करने चाहिए हमें? एक कर लीजिए, अगर ढंग से कर रहे हैं तो एक काफी है। गलत तरीके नहीं, से 2 करें सेट तो मैं करती हूँ लेफ्ट राइट में। गुड, दैट इज गुड। एक काफी है। लेकिन जो करते हैं वो कहते हैं कि वो 10-10 सेट भी करते हैं। एक ढंग से कर लो बहुत है, गलत करना है तो फिर आप 100 कर लो,
सही करना है तो एक काफी है. With the breathing, with full mindfulness, do that once. Just once. Good enough. Okay, चलो sir. चलो, Thank for you. your convenience I will say 2. Set of 2 कर लो, ठीक है. एक बार लेफ्ट लेग आगे जाएगा, एक बार राइट लेग आगे जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं होती. जी. If you understand all the steps of सूर्य नमस्कार, जो लेफ्ट आगे जा रहा है वो ऑटोमेटिकली राइट आगे आ जाता है उसके सेकंड फेज में. So you don't have to do that 2 times. 1 is good enough. But if you are convinced your mind that you have to do it twice, do it twice. But do it slowly, with full mindfulness, with full breath work. It is sufficient. उसके बाद शवासन में लेट जाओ एंड अपनी पूरी बॉडी को सर से टो तक और टो से सर तक मॉनिटर करो एंड उसके रिलीज बाद ऑल द स्ट्रेस. त्रिकोणासन इतना काफी है. त्रिकोणासन पहले करो, अच्छा, वो क्योंकि पहले. सूर्य नमस्कार के बाद आपको शवासन में लेटना चाहिए, या ओके. एटलीस्ट आपको पद्मासन में बैठना चाहिए. I prefer to lie down. So I said go straight away into शवासन. तो मैं स्टैंडिंग के बाद लेटने वाले करता हूँ. लेटने के बाद पहले पीठ के बल और फिर पेट के बल, उसके बाद मैं बैठता हूँ एंड देन आई डू द सिटिंग वंस. सो यू कैन यूज बोथ द वेज. और हलासन सर वो कब करना चाहिए, पहले या बाद जब में? आप लेटे हुए हो. शवासन के बाद. शवासन में तो पहले आप रेस्ट कर लोगे सूर्य नमस्कार के बाद. उसके बाद जब आप जी. कर रहे हो तो आप उसको पाँव को उठा के पहले आप अर्ध सर्वांग करोगे, जी. फिर पूर्ण सर्वांग करोगे, उसके बाद हलासन करोगे, एक ही स्ट्रेच में. जी. Okay, sir. Thank you. Good, very good. So you have been practicing, right, Priya? अब मैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम ही करती हूँ. Yeah, good. That's अभी very ये good. सब करूंगी. So initially, if you don't have the time, do standing में दो, उसके बाद शवासन करो. शवासन के बाद आप meditation करो. That will be the right. अगर और कुछ नहीं करना, जी. but बीच में वो सब भी करो. It is very good. ये पूरा आसन का हो जाएगा ना सर? हम लोग तो मिक्स कर देते हैं, फिर वो जंपिंग जैक भी हो जाता है, फिर उसके बाद सारा Don't कुछ मिक्स हो जाता है. exercise. Don't exercise. Even if you do 4 asanas, एक खड़े होके, एक लेट के, एक उल्टा लेट के, एक बैठ के, that is good enough. Do with जी. breath हाँ, work. प्लैंक तो मैं करती हूँ. Do with breath work. And do with full mindfulness. उस समय ये नहीं सोचना है मेरे को पढ़ना है, ये करना है, कुछ नहीं. सिर्फ उस समय ब्रेथ वर्क और बॉडी के स्ट्रेचिंग बस. जी. Full mindfulness. That means your mind is completely in the present, and in the present you are doing an asana. So focus on the asana, nothing else, and see the magic. Yes, sir. Yeah. Good prayer. That's a very good question that you have asked. So sequence आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. बट फर्स्ट स्टैंडिंग बोलते ही हैं सब लोग, उसके बाद सिटिंग या लेट के जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं. देन कंप्लीट द होल थिंग एंड लास्ट में मेडिटेशन के लिए तो बैठोगे ही ना, तो बैठने वाला मैं इसलिए लास्ट में करता हूँ. राइट? Okay, Yes, good. sir. Anybody Thank you. else who has any question? I'll need another 2 minutes before we close, so I'll extend it by another 2 minutes for sharing. Yes. After how many hours of a major meal can we do yoga as per Patanjali or some? अगर सुबह सुबह कर रहे हो तो खाली पेट ही होगे ना, पानी पी के जाओ. नहीं, suppose I do in the evening. कम से कम 3 घंटे का गैप रखो खाने के बाद. तो लंच अगर आप 2-3 बजे कर रहे हो तो 6 बजे तक खाना हजम हो जाएगा. Anything described in Patanjali or anything described like this in Patanjali or? Nothing described, but it should be on empty stomach. Empty stomach means खाना आपके पेट से निकल के सिस्टम में डाइजेस्ट होके आगे चला गया है, which normally takes 3 hours, 3 to 4 hours. Yeah. खाली पेट है तो बहुत अच्छी बात है, रात को डिनर किया सुबह कर लो, बहुत बढ़िया है. लेकिन अगर शाम को कर रहे हो तो मेक श्योर दैट देयर इज अ 4 hours गैप, 3 to 4 hours गैप आफ्टर द लंच. शाम को ही करोगे ना, रात को तो नहीं कर सकते. रात को करना भी नहीं चाहिए. रात को सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, नॉट योगा, नॉट सजेस्टेड. Yeah, meditation you can do anytime. Pranayam you can do, though preferred in the morning, but yogasan definitely in the morning, outside or at home in the morning. That is the best time. And khali pet. Khali pet means khali pet. Yeah. Okay. Right. Anybody else? मतलब Okay. ब्रेकफास्ट कितने टाइम बाद करना चाहिए इसके? आने 1 के घंटे बाद. बाद.
नहीं आने के मतलब बाद तो you can योग के relax, बाद, you आसन can के बाद। simply relax, take a bath and then you are ready for breakfast. Okay. इसके बाद तो जब मर्जी जो मर्जी कर सकते हो, बट ये करना है तो खाली पेट होना चाहिए। That's it. जी, क्योंकि जिम में तो वो बोलते हैं ना कि एक ब्राउन ब्रेड खा के आना और एक एप्पल। मैं वो ये जिम वालों से पूछूं। Yeah. Yes. Okay. Anybody else who has any question? Soumya ji, Sushil Jain ji. Okay. Gyan Chand Mishra ji. Anything you would like to ask? Anything you want to share? Jyoti ji, Mani ji, VP Singh ji. Sir, final closing में आपके कुछ advice, guidance, VP Singh ji, अगर आप हो. Okay. Anybody else who has any question? No question? All right. So I'll come to Vijay ji. Anything for you? सर ये जो सूर्य नमस्कार आई फाइंड प्रीटी डिफिकल्ट एक्चुअली। मैंने धीरे देखा धीरे करिए सर, धीरे धीरे करिए, जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट करना शुरू करिए। एक बार, ज्यादा नहीं कोशिश करनी, एक ही बारी करनी है, जितना होता है करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। पहली बारी में किसी का नहीं होता। इनफैक्ट लेट मी टेल यू 90% ऑफ द पीपल डू इट रॉन्ग। So I'm giving you some consolation. Start from where you are and then keep improving. Right? Yes. रितु जी, anything for you? आपने तो काफी आसन के एक्सेप्टेंस भी बोली, तो आप प्रैक्टिस करती होंगी, तो शेयर योर एक्सपीरियंस। Anybody who is doing it regularly should share their experience. Actually, for youngsters के लिए मुझे लगता है they can do the gymming and everything very easily, but coming to our middle age and latter middle age, you know, when you start getting problems and your bones start getting weaker and muscles also, I think yoga is the best, you know, because it's mindful exercises and it keeps you aware, alert, focused, and your back starts getting stronger, so you be more flexible. So it's an all, चार you know, वर्ड्स बोलते हैं अक्सर योगा करने के लिए, 4 वर्ड्स बोलते हैं, सजग, सचेत, शांत चित, प्रसन्न चित। हाँ, yes. तो आप सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, शांत चित रहेंगे, प्रसन्न चित रहेंगे। ये जिम में नहीं होगा, तो सब लोग जो जिम जा रहे हैं योगा भी करनी शुरू कर दो, या वहां पे ये सब चीजें लेके करो। ओके, यस, एंड इट इज नॉट अ कंपटीशन। यू डोंट हैव टू बी बेटर देन देम, यू हैव टू बी बेटर देन योरसेल्फ। जो आप कल थे उससे बेटर होना है, ठीक है? तो आपको अपने मसल्स दूसरों के मसल से बढ़िया नहीं बनाने, आपके कल की जो हालत थी उससे अपने आप को बेटर बनाना। सो वेदर यू गो टू जिम और वेदर यू कम टू योगा, रिमेंबर द बेसिक रूल्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अक्सर लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा सब लोग करते हैं, बट लेकिन अक्सर ये कंपटीशन सा हो जाता है जिम में, है ना? वो इतने दिनों से आ रहा है, उसकी बॉडी ऐसी है, हाय मेरा कब होगा, काइंड ऑफ थिंग। सो इट इज ऑल फिजिकल फिजिकल फिजिकल। उसमें माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग ने ऐड कर लो, इट विल बिकम बेटर। यस, okay, so with this we come to the end of the session. एक Thank चीज you very और much. Yes, any question? सर, एक चीज और कि जो मेडिटेशन करते हैं हम लोग, तो उसमें कोई एक चीज दिमाग में रख के उस पे फोकस करना होता है, या जो 7th माइंड step में है आता वो, जा रहा है? 7th step है, वेट करो, अभी 3rd step पे हैं हम लोग। मतलब मैं तो किसी भी स्टेप पे नहीं हूँ, मैं तो अभी नहीं हूँ। कौन सा है 3rd स्टेप? अभी जो 3rd है ये यम नियम के बाद आसन की बात कर रहे हैं। 7th step में आएगा ध्यान, which is meditation. We'll talk about this later. Yes? मतलब जैसे अभी मैं नॉर्मली करती हूँ Hello, मेडिटेशन, तो उसमें hello. मैं क्या सोचूं? I cannot answer that right now. ओके We ओके are in the सर, 3rd step. You're talking of the 7th step. Wait for 4 weeks. अभी जैसा कर रहे हो करो, और talk to me tomorrow. Yeah? ओके सर, Yes. थैंक यू। All right. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Until we meet next week. Am Brahmasmi. Enjoy. Okay. Bye-bye. Take care.